you write coordinates, coordinate geometry में 1,2 लिखा और 2,1 लिखा, क्या ये अलग coordinates है कि same ही है? अलग होते हैं ना. So in parenthesis the order also matters. Parenthesis में जब आप चीजें लिखते हो, order matters. These are ordered pairs m, n. So 0,2 is different from 2,0. Okay, RJ? So whenever round bracket is used, parenthesis is used, you count ordered pairs. M, n is different from n, n. So इसका आंसर होगा 12 pairs. So if anyone is wondering कि इसको without trial करना है तो कैसे आप करोगे? So without trial आपको करना है तो this is your technique. So we want modulus of 1 plus mn to be less than modulus of m plus n. Square both sides. So left hand side हो जाएगा 1 plus mn the whole square, and that is to be lesser than m plus n the whole square. So this will become 1 plus the 2ab term will be 2mn plus m square n square. यहाँ पे हो जाएगा m square plus n square plus 2mn. Okay? The 2mn term can be cancelled off from both sides. Now, when you collect all terms on one side, on the left hand side we'll have 1 minus m square minus n square plus m square n square less than 0. अब अगर इसको फैक्टराइज करना है, okay, so we have 1 minus m square, and from these two terms pull out minus n square common. So when you pull out minus n square common, you'll be left with 1 minus m square. And then you further pull out 1 minus m square common, and you'll be left with 1 minus n square. अभी आपको ये दो टर्म का प्रोडक्ट लेस देन 0 चाहिए. When you want two terms का product less than 0, what should happen? Product negative आने के लिए we need one term positive and one term negative. Okay, so one term positive होना चाहिए, one term negative होना चाहिए. If ये वाला term positive है, if 1 minus m square is positive, so 1 will have to be greater than m square, taking minus m square to the right hand side. 1 will have to be greater than m square. तो आपका m square जो है वो 1 से छोटा चाहिए, एंड हमें पता है m n आर इंटीजर्स. कौन से इंटीजर का स्क्वायर 1 से कम आता है? The only integer whose square is less than 1 will be 0. So m will have to be 0. वैसे ही सेकेंड केस, अगर आपको ये टर्म चाहिए पॉजिटिव, अगर ये सेकेंड टर्म पॉजिटिव चाहिए, सेम आर्ग्यूमेंट यहाँ पे, if 1 minus n square आपको पॉजिटिव चाहिए तो 1 will have to be bigger than n square, और यहाँ पे आपको n 0 लेना पड़ेगा. So that is your mathematical way of deciding कि m या n में से किसी एक को 0 लेना जरूरी है. हमने ट्रायल से जो डिसाइड किया था वो मैथमेटिकली ऐसे वर्कआउट कर सकते हो कि one of them has to be 0. बट ये सब एग्जाम टाइम पे लोगों को स्ट्राइक नहीं होता फैक्टराइजेशन करके ये एक टर्म पॉजिटिव होना है. दैट इज व्हाई आई सेड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन वुड बी बाय ट्रायल. इफ यू हिट अपॉन दैट आइडिया कि एक नंबर को 0 लेना ही पड़ेगा, देन दिस क्वेश्चन कैन बी डन इजीली बाय ट्रायल. अदरवाइज ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है. ठीक है. सो इफ एनीवन वांट्स स्क्रीनशॉट, क्विकली डू सो. डन. This is the second slide. If anyone wants the second technique. Okay.
This was last year's slot 3 question. A difficult question. Again, this would be a question that most students should be leaving during exam time. ये सबको करने वाला क्वेश्चन नहीं है. चेक करो, if you are able to do it, try करो. Good, very good. So some of you have got the correct answer. 2 is the answer. Good. So number of distinct real values of x satisfying this given equation is what? So first of all, what is the meaning of this term max of x comma 2? Max of x comma 2 मतलब क्या? ये जो दो नंबर आपने इनपुट किए हैं x and 2, उसमें से जो बड़ा नंबर होगा that will be the output, maximum out of x comma 2. So for example, x को आपने 5 लिया, x को 5 लिया तो it will be maximum out of 5 comma 2 and maximum out of 5 comma 2 is 5. तो जब आपका इनपुट 2 से बड़ा नंबर है तो वो आपने जो भी x का वैल्यू दिया है एज अ इनपुट दैट विल बी योर आउटपुट ऑफ मैक्स. मैक्स का मतलब है ये दो नंबर में से जो बड़ा नंबर है वो लिया जाएगा. इंस्टेड इफ यू टेक x एज 1, अगर इसमें x को 1 लेते हो तो ये मैक्सिमम ऑफ 1 comma 2 and maximum of 1 comma 2 then will be 2. Okay, so it is a bigger number that will be given as the output. Similarly, min मतलब ये दो नंबर में से जो छोटा नंबर है that will be your output. So max of x comma 2 minus min of x comma 2, and that is equal to modulus of x plus 2 minus modulus of x minus 2. अभी ये क्वेश्चन को अगर आप ट्रायल से करते हो, ट्रायल इन द सेंस आप रेंजेस को चेक करके करोगे तो सी we know that modulus of x plus 2 के लिए the critical value is -2. -2 से आपने छोटे नंबर्स लिए, -2 से बड़े नंबर्स लिए तो इसका साइन चेंज होता है. वैसे ही x -2 के लिए the critical point is +2. So you take values in those ranges that are formed by -2 and +2. So consider -2 and +2 as your critical points. और उससे जो नंबर लाइन के 3 रेंजेस बनते हैं उसमें टेस्टिंग करो. पहले क्या करोगे, ये नंबर्स को खुद को लेके टेस्ट करते हैं. पहले केस में लेट्स से x is 2, चेक करते हैं वो वर्क करेगा क्या. इफ यू टेक x as 2, द लेफ्ट हैंड साइड मैक्सिमम ऑफ 2 comma 2 विल बी 2, मिनिमम ऑफ 2 comma 2 विल बी 2. तो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 आने वाला है. जब आप x को 2 लेते हो, मैक्सिमम ऑफ 2 comma 2 is 2, मिनिमम ऑफ 2 comma 2 is 2, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाता है. चेक करो राइट हैंड साइड भी 0 आता है क्या. जब आप x को 2 ले रहे हो तो ये पहला टर्म हो जाएगा 4 और ये दूसरा टर्म बन जाएगा 0. सो 4 minus 0 is 4. तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहा है. सो x equal to 2 does not work. Let's try x equal to -2 itself. See -2 itself works or not. अगर हमने x को -2 लिया तो लेफ्ट हैंड साइड maximum of -2 comma 2 will be 2 and minimum of -2 comma 2 will be -2. So हो जाएगा minus of -2 से 4. So LHS बन जाएगा 4. Right hand side when you take -2,
you'll get 0 and this term will become 4. -2 होता है -4, मॉड्यूलस लेके बन जाएगा 4, तो ये आ जाएगा -4. अगेन इट इज नॉट वर्किंग, सो +2 और -2 themselves तो don't work out. Now let's take a value more than 2 and test. x को 2 से बड़ा इस रेंज में लेके टेस्ट करते हैं, 2 से बड़ा this range. So when you take x more than 2, maximum of x, 2 will be x. x अगर 2 से बड़ा नंबर है, ये अगर नंबर 2 से बड़ा है, तो maximum of x, 2 will be x. And that minimum of x, 2 will be 2. x अगर 2 से बड़ा नंबर है, तो छोटा वाला नंबर हो जाएगा 2. The left hand side turns out to be x minus 2. For numbers greater than 2, modulus of x plus 2 will be simply x plus 2 itself. Okay, modulus of x plus 2 हो जाएगा एक पॉजिटिव नंबर का मॉड्यूलस, 2 अगर 2 से बड़ा है x, तो एंड पॉजिटिव नंबर का मॉड्यूलस इज दैट नंबर इटसेल्फ, सो इट विल बी सिंपली x plus 2. एंड फॉर x ग्रेटर देन 2 ये भी टर्म पॉजिटिव होगा. x अगर 2 से बड़ा है, x minus 2 also will be positive, so positive number का modulus will be that number itself. So your right hand side, x and minus x will cancel off, 2 minus -2 will become 4. अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल चाहिए, तो we need x minus 2 to be equal to 4, तो आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा, x is 6, which is a valid solution. अगर assumption था कि x 2 से बड़ा होना चाहिए, तो इस केस में जो सोल्यूशन मिल रहा है वो 2 से बड़ा है, so you get one possible solution 6. ठीक है, तो इस रेंज में आपको एक सोल्यूशन मिलता है 6. 6 will fit this equation. समझा? चलो, now let's test this range between -2 and +2. So now let's take x को between -2 and +2. So now when you're taking x between -2 and +2, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड आने वाला है, x अगर -2 एंड +2 के बीच में है, मतलब क्या, वो 2 से तो छोटा ही है, x is lesser than 2, so maximum of x and 2 will be 2 and minimum of x and 2 will be x. okay, x अगर 2 से छोटा है, तो इन दोनों नंबर में छोटा नंबर होगा x, so left hand side will turn out to be 2 minus x. And let's see what the right hand side will become. So when your x value is between -2 and +2, तो ये टर्म x plus 2 will be still positive. x अगर -2 और +2 के बीच में, फॉर एग्जाम्पल x अगर -1 भी लिया, तो भी -1 और 2 ऐड करके आपको एक पॉजिटिव नंबर ही मिलने वाला है. सो दिस x plus 2 is still positive, तो उसका मॉड्यूलस विल बी x plus 2 itself. And x minus 2 will be negative. x minus 2 नेगेटिव होने की वजह से उसका मॉड्यूलस विल बी माइनस ऑफ दैट नंबर, तो ये बाहर का माइनस और वो माइनस कैंसिल करके विल बिकम प्लस ऑफ x minus 2, and this will become 2x. 2 and -2 will cancel. So now left hand side to be equal to right hand side, 2 minus x will have to be equal to 2x. उससे आपको मिल जाता है 2 is equal to 3x और x मिलेगा 2/3. So x equal to 2/3 is your second solution. And 2/3 valid है क्या? तो yes, it is in this range, -2 और +2 के बीच में ये 2/3. So x equal to 2/3 is your second solution. तो इस रेंज में एक और आपको सोल्यूशन मिलता है 2/3. If you take x less than -2, अब ये तीसरा रेंज टेस्ट करते हैं. This range x less than -2, उसमें कोई सोल्यूशन मिलता है क्या, चेक करते हैं. Now if you are taking x less than -2,
द मैक्सिमम आउट ऑफ x and 2 will be 2. अगर x -2 से छोटा नंबर है तो इन दोनों में से बड़ा नंबर होगा 2, so left hand side will be 2, and इन दोनों में से छोटा नंबर होगा x, so left hand side will stay 2 minus x. And right hand side, if your x is less than -2, so for example x अगर -3 है तो -3 + 2 हो जाएगा -1, तो यहाँ पे आपको एक नेगेटिव नंबर अभी ब्रैकेट अंदर मिलेगा मॉडुलस के, एंड मॉडुलस के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है मॉडुलस विल पुट अ एक्स्ट्रा माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ इट, so it will become minus of x plus 2. The second term, this term also will be negative, so again modulus will put an extra minus sign in front of it, but इधर बाहर ऑलरेडी एक माइनस साइन है तो वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x minus 2. Now this minus x and this plus x will cancel, we will get -2 से -4. Now if we equate 2 minus x has to be equal to -4, उससे आपको x मिल जाता है 6, which is not a valid solution in this range. हमने तो assume किया x is less than -2, how can x be 6? less than -2 चाहिए हम x को, तो ये valid नहीं है. तो आपको ऐसे दो ही valid solutions मिलते हैं, 2/3 and 6. So that's your answer, two valid solutions, 2/3 and 6. ठीक है? So I hope everyone who said 2 solutions, it was not by fluke and you actually found these 2 solutions. मे बी कुछ स्टूडेंट्स ने इस इक्वेशन में इतने बार 2 2 2 2 देखा इसलिए 2 बोल दिया होगा. आई होप इट इज नॉट दैट केस. इफ इट दैट वाज द केस, इट वाज जस्ट लकीली दैट इट वर्कड आउट, दैट देयर आर 2 सॉल्यूशंस. तो ये दो सॉल्यूशंस है, 2/3 and 6. Another way in which you could have answered this question was through graphs. You could have plotted the graphs of the left hand side and right hand side, और वहां से दो सॉल्यूशन है आपको दिख जाएगा. Arushi, if you are taking x as less than -2, तो -2 से छोटा नंबर है x, तो आपका जो मैक्सिमम आउट ऑफ दीज टू नंबर्स होगा विल बी 2, राइट? 2 बड़ा नंबर होगा. x अगर -2 से छोटा है तो बिगर नंबर विल बी 2, एंड स्मॉलर नंबर आउट ऑफ दीज टू विल बी x. सो आपका लेफ्ट हैंड साइड विल बी 2 minus x. एनी डाउट इन दैट? लेफ्ट हैंड साइड टर्न्स आउट टू बी 2 minus x. एंड राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड जब देखते हो, अगर x -2 से छोटा है, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक -3 अगर है, तो -2 से छोटा नंबर एंड 2 जब ऐड होता है, यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर आने वाला है मॉड्यूलस के अंदर, एंड मॉड्यूलस ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज अ माइनस ऑफ दैट नंबर, तो आगे एक माइनस साइन लग जाएगा, सो माइनस ऑफ x plus 2. सिमिलरली यहाँ पे भी एक नेगेटिव नंबर आएगा. इफ यू टेक x एज समथिंग लेस देन -2, फॉर एग्जाम्पल x अगर -3 है तो ये -5 बन जाता है, एंड मॉड्यूलस उसको भी पॉजिटिव करने के लिए एक और माइनस साइन लगा देगा बाहर, और ये बाहर ऑलरेडी एक माइनस साइन है, तो माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस x minus 2. ठीक है? तो राइट हैंड साइड इधर बन जा रहा है -4. Now if you equate the left hand side and right hand side, उससे हमको x6 मिलता है, बट हमारा assumption तो था कि x has to be less than -2. x को less than -2 ही assume किया है, तो how can 6 be a valid solution? इसलिए उसको रिजेक्ट किया. So you are getting 2 valid solutions. x is 6 और x is 2/3. ओके, ठीक है, चलो. So those who want screenshot of this first slide, do so. Second slide. ठीक है. Now if anyone wanted to plot graphs of these, just to show you इसके graphs कैसे आते हैं, तो आपको थोड़े सैंपल पॉइंट्स लेके इनके ग्राफ्स प्लॉट करने हैं. So is our x axis,
the y-axis. So if you consider the left hand side, I am plotting the left hand side का graph on in red color. So you will see that when you take x as 2, x को जब आप 2 लेते हो तो आपका जो आउटपुट आने वाला है वो 0 आएगा. Your outputs are called as y over here. So x जब 2 लोगे, maximum of 2 will be 2, minimum of 2 will be 2, और आपको 2 minus 2 से 0 मिलेगा y. ठीक है. So when x is 2, y is 0. x जब 2 है तो y 0 है. When you take x as 3, x 3 लोगे तो maximum of 3, 2 will be 3 and minimum of 3, 2 will be 2. तो वो 3 minus 2 से आपको 1 मिलेगा. x को 4 लोगे तो x जब 4 लोगे maximum of 4, 2 will be 4 and minimum of 4, 2 will be 2 and you'll get the output 2. x को 5 लो तो आपका जो y आएगा will be 5 minus 2 से 3 and so on. So you'll get a increasing function, linearly increasing, ऐसे straight line मिलेगी. x को आप 3 लो तो y 1 आएगा, 4 लो तो 2 आएगा and so on. वैसे ही आप अपने x को decrease किया. So if you take x as 1, the maximum out of 1, 2 will be 2 and minimum of 1, 2 will be 1. If you take x as 2, so maximum of not 2, x as 0, maximum of 0, 2 will be 2 and minimum of 0, 2 will be 0. और ऐसे करके आपको इस साइड पे भी एक लाइन मिलेगी. So basically your left hand side is nothing but modulus of x minus 2. If you have understood this function's behavior, you will see that it is nothing but modulus of x minus 2. It is the graph of mod x shifted to the right by 2 units. ये mod x का जो v shape graph है वो 2 unit to the right shift हुआ है. So your left hand side is simply mod of x minus 2. ये अगर आपको पहले realize हो जाता है कि left hand side से जो results आते हैं वो mod of x minus 2 है, तो you can use that also to solve this question. Okay? And if you plot the right hand side graph, ये जो right hand side के values अगर आप plot करके check करोगे, you will see that when you take x as 0, यहाँ पे आएगा आपका 2 minus 2 से 0. When x is 0, इसका y value 0 आएगा right hand side का. I am plotting right hand side in blue color. When you take x as 1, you will see that this is an increasing graph. X at 2 पे it gives you value 4 और उसके बाद it will give us a constant value of 4. तो ये function जो है at x equal to 2 it will give us a value 4. x जब इसमें 2 लोगे तो 4 आएगा. उसके बाद x आप कितना भी बढ़ाओ आपका y value 4 ही आता रहेगा. You'll get a straight line like this. If you decrease x, this side also at minus 2 you will get 4. Minus 2 तक ये values घटते जाएंगे. You will get minus 4 sorry. And उसके बाद you will get a constant value of minus 4. तो ये right hand side का graph ऐसे आता है. So you will see that these two graphs intersect at exactly 2 points. एक है वो x is 2/3 पे और दूसरा है x is 6 पे. वो आपको जो दो solution मिले थे. x 6 पे ये graph intersect होते हैं, x 2/3 पे intersect. So if you had plotted the graphs through this also you could have figured out कि इसके दो solutions है. But this again is a very difficult thing to do during exam time. Only those who are very good at graphs and all that will be able to figure that out. ठीक है? चलो. So if anyone wants screenshot of this slide, quickly do so. So this was probably the toughest question of last year's slot 3 CAT 24 का. I myself was in slot 3. I did not do this question during exam time. I ran out of time. I thought कि बाद में करेंगे लेकिन रह गया था. ठीक है, डन. Next. Before we solve the next question, one basic idea regarding modulus that you should know. So, if I take this modulus equation, mod of x minus 5 is equal to 8. Now, what are the solutions of this equation? So, mod of x minus 5 अगर 8 है,
तो x माइनस 5 8 होगा या x माइनस 5 माइनस 8 होगा. So from this I'll get x is either 13 or x is minus 3. So those are the solutions. Now, if you plot those solutions on a number line, we have 13 and we have minus 3. Those are the solutions which you consider in relation with 5. So when you relate them with 5, what you will see is 13 is at a distance of 8 from 5. Minus 3 is also at a distance of 8 from 5. तो mod of x minus 5 equal to 8 जब हमने सॉल्व किया तो हमें ऐसे दो नंबर मिले हैं which are at a distance of 8 from 5 on the number line. Okay, so in general when you have this kind of a term mod of x minus a or mod of a minus x, मॉड्यूलस के अंदर द ऑर्डर ऑफ सब्ट्रैक्शन डजंट मैटर, x माइनस a लिखो या a माइनस x लिखो, इट्स वन एंड द सेम. सो मॉड ऑफ x माइनस a हो या a माइनस x हो, दे गिव डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a on number line. So this concept can be useful in solving modulus based questions. So mod of x minus 5, this term itself is distance of x from 5 on number line, और वो हमें चाहिए 8. So distance of x from 5 अगर 8 चाहिए तो 5 से 8 आगे आता है 13, 5 से 8 पीछे आता है -3. ऐसे वो आपको दो सॉल्यूशन मिले. ठीक है. So I'm sure you must have seen this during your basics classes, but those who have not seen, quickly do take a screenshot of this. So let's answer a couple of questions based on this idea. Okay, so now you have sum of these two modulus terms equal to 20. First of all, to bring it in this form, mod of x minus a or mod of a minus x, what we need to do is get rid of this 3. So we'll divide throughout by 3. जो equation दिया है, first let's divide by 3. When you divide throughout by 3, we'll get modulus of x minus 20 by 3 plus modulus of x minus 40 by 3 is equal to right hand side पे आ जाएगा 20 by 3. We have divided throughout by 3. Okay, so now our first modulus term, ये जो term है, this is distance of x from 20 by 3. The second modulus term is distance of x from 40 by 3. और वो दो ऐड करके सम शुड बी 20 by 3. तो नंबर लाइन पे ये है 20 by 3, ये है 40 by 3. तो अभी आपको x ऐसा लेना है कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम 20 by 3 एंड डिस्टेंस फ्रॉम 40 by 3 ये दोनों ऐड होके इट शुड बिकम 20 by 3. सो वेयर वी कैन टेक x. उसके लिए पहले देखोगे कि ये दो नंबर में इटसेल्फ कितना डिस्टेंस है. अभी ये दो नंबर में जो डिस्टेंस है विल बी द डिफरेंस, और इनका डिफरेंस है 20 by 3. तो इन दोनों में ही डिस्टेंस है 20 by 3 का. ठीक है. सो अगर आपने x को कहीं इनके लेफ्ट में लिया, सो 20 by 3 के लेफ्ट में आपने x को लिया, तो x का डिस्टेंस फ्रॉम 20 by 3 प्लस द डिस्टेंस फ्रॉम 40 by 3,
ये दोनों डिस्टेंस जब ऐड करोगे तो वो सम तो 20/3 से ज्यादा आएगा, हमें तो वो 20/3 चाहिए। सो x को इस बाजू लेना doesn't make sense, it will not fit. Same problem will happen if you take x to the right of 40/3. x अगर आपने यहाँ पे लिया तो its distance from 40/3 plus its distance from 20/3, ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे डिस्टेंसेस, वो सम 20/3 से तो ज्यादा ही आएगा, हमें तो वो डिस्टेंस का सम 20/3 रखना है, तो ज्यादा करके नहीं चलेगा। सो taking x to the right of 40/3 also will not work. So where should we take x? Somewhere in between. So if you take x anywhere in between, कहीं पे भी बीच में लोगे तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम 20/3 और ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम 40/3, these two distances will add up and will give you the sum 20/3. तो वो x बीच में आप कहां पे लेते हो डजंट मैटर, एनीवेयर इट विल वर्क। सो आपका जो रेंज ऑफ वैल्यूज है x के लिए वो है 20/3 से लेके 40/3 तक। सो ये क्वेश्चन का जो आंसर है, x का जो सोल्यूशन रेंज आएगा, द इनपुट दैट यू कैन गिव will be from 20/3 to 40/3. 20/3 डेसिमल में आप चेक करोगे, 20 when you divide by 3 होता है 6.66 and 40 when you divide by 3 it is 13.33. तो आपका जो x का वैल्यू है वो 6.66 से बड़ा होना चाहिए, 13.33 से छोटा होना चाहिए, इंक्लूडिंग दोस नंबर्स। तो देखो आपको क्या पूछा है क्वेश्चन, फॉर ऑल रियल नंबर्स x दिस कंडीशन नेसेसरली होल्ड्स इफ। तो ये कंडीशन नेसेसरली ट्रू होने के लिए x का कौन सा वैल्यूज चलेगा, तो वी नो दैट x के लिए एग्जैक्ट रेंज तो ये होना चाहिए 6.66 टू 13.33। तो ऑप्शन में से कौन सा रेंज चलेगा ये आपको चूज करना है। सो इफ यू लुक एट ऑप्शन ए, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 6। तो अभी ऑप्शन ए में देयर आर सम नंबर्स which are present which are not correct। 6 से चालू हो रहा है मतलब इसमें 6.1 6.2 ऐसे भी नंबर्स इंक्लूड हो गए, बट हमें तो पता है x तो 6.66 से बड़ा होना चाहिए, सो ऑप्शन ए विल नॉट वर्क आउट। इफ यू चेक ऑप्शन बी, 7 से लेके 12, 7 से लेके 12 ऑल नंबर्स विल बी वैलिड, एनीथिंग बिटवीन 7 and 12 will be part of this valid range. So option B is your correct answer. ऑप्शन सी देखोगे उसमें 15 तक आगे गया है, बट हमें तो पता है x 13.33 तक ही जा सकता है, आगे के नंबर नहीं चलेंगे, तो ऑप्शन सी में ऐसे नंबर्स आ चुके हैं जो नहीं चलने वाले x के लिए। वैसे ही ऑप्शन डी ऑल्सो इज गोइंग अप टू 14, तो 13.33 के नंबर्स इसमें आ चुके हैं जो नहीं चलने वाले, सो ऑप्शन डी ऑल्सो इज इनकरेक्ट। So be careful. This question is not asking us what is the range of x. The range of x is this. ये आपका correct exact range of x जो पूछा होता तो ये होता, बट आपको पूछा है कि ऑप्शन में से which range is valid for x. This condition should necessarily hold for that range. Raj, this would be the fastest way of doing this question. If you want to simplify this, आप cases लेके करना चाहते हो तो कर सकते हो. You can square both sides, वैसे भी कर सकते हो. If you want to make the question more steps में करना है आपको, तो there is of course other methods possible. The fastest way is thinking in terms of distance, because यहाँ पे आपको कुछ करना तो था ही नहीं, आपको बस डिस्टेंस के टर्म्स में सोचना है कि x का डिस्टेंस फ्रॉम 20/3 एंड x का डिस्टेंस फ्रॉम 40/3 ऐड करके आपको 20/3 करना है, तो उसके लिए क्या वैल्यूज चलेंगे x के, तो वी कैन सी 20/3 एंड 40/3 itself have a distance of 20/3 between them, so you take x anything between those two numbers, it's going to work out. How can you go by options? यहाँ पे options से करना will not be the ideal way, because we are not asked कि which set of options is going to fit this. भी ऑप्शन से करना यहाँ पे, तो फॉर एग्जाम्पल if you
बाय चांस ट्राई 13, आप बस ऐसे ट्रायल से वैल्यूज चेक कर रहे हो, आप देखोगे ये दो ऑप्शन में 13 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये दो ऑप्शन में 13 इंक्लूडेड है। आपने बस उतना ही देखा कि 13 दो ऑप्शन में प्रेजेंट है, दो ऑप्शन में नहीं है, तो आपने 13 इसमें ट्राई किया। 13 3 जा 39 -20, और यहां पे आ जाएगा 13 3 जा 39 -40, तो ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 1, एंड इट इज गोइंग टू वर्क। सो यू विल सी दैट 13 वर्क्स। 13 वर्क्स, तो पहले दो ऑप्शन में 13 आता नहीं है तो इसको एक्सक्लूड कर दोगे, एंड ये दो ऑप्शन में 13 आ जाता है तो इनको इंक्लूड करोगे। तो मतलब क्या, ये पहली ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे, बट योर करेक्ट आंसर इज एक्चुअली ऑप्शन बी। इसलिए ऑप्शन से करना ये क्वेश्चन बहुत ही डेंजरस होगा, because this is not asking you what is the range of values of x. रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x अगर आपको दिया होता तो एग्जैक्टली ये दिया होता एज वन ऑफ द ऑप्शंस, तो फिर आप ठीक है ऑप्शंस चेक कर सकते हो। बट ये आपको बस पूछ रहा है कि इनमें से कौन से ऑप्शन के लिए ये इक्वेशन वर्क करेगा। इट इज नॉट नेसेसरली द एंटायर रेंज दैट हैज बीन गिवन। Okay, so that is why doing this by options is dangerous. So don't do these kind of questions by options. It is not asking us for the range of values of x for which this equation is true. आपको पूछा है कि इनमें से कौन से ऑप्शन के लिए ये नेसेसरली ट्रू होगा। Arushi, if you take x as less than 20/3, the distance of x from 20/3 plus distance of x from 40/3, ये दो डिस्टेंसेस जो मैंने इधर लाइंस बनाए ब्लू, वो ऐड किया तो 20/3 आएगा क्या? नहीं ना। इफ 20/3 एंड 40/3 में ही डिस्टेंस 20/3 है, तो फिर ये दोनों ऐड करके डिस्टेंस 20/3 से ज्यादा ही आएगा ना। करेक्ट ना। ये जो मैंने नीचे रेड लाइन बनाया है वो है डिस्टेंस 20/3 का। ओके, 20/3 एंड 40/3 में itself this distance is 20/3. So if you take x to the left of 20/3, you'll be adding this distance plus this distance. ये दोनों का sum 20/3 से बड़ा ही होगा ना। Same problem will happen when you take it to the right of x. Have you not done these kind of things during your basics class? Distance method. See, it is very important that you attend basic sessions before you come for this, because ये सब चीजें आपको at this stage पता होनी ही चाहिए। Distance mod of x minus a gives distance of x from a on a number line. Otherwise, these kind of questions you will keep on doing by just equation solving, step by step करते रहोगे. You will not be able to do it quickly as we have done over here. Okay, so if you have not yet attended these basic sessions, do attend that. चलो next question. This was a very interesting question asked in CAT 21. If you know the distance concept, this can be done in 30-40 seconds. If you don't know the distance concept, then you will have to square throughout and set up conditions, and it will become a lengthy process of 4 to 5 minutes. How many integers n satisfy these inequalities? Okay, how many integers n satisfy these inequalities? So let's see the terms carefully. This first term is distance of n from 60. This second term is distance of n from 100.
and the third term is distance of n from 20. Correct. Karan and Parth already have correctly answered. Good. So now mark those numbers on the number line. ये है 20 on the number line, ये है 60 on the number line, और ये है 100 on the number line. ठीक है. आपको n ऐसे लेना है कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम 60 सबसे कम होना चाहिए. इट शुड बी क्लोजेस्ट टू 60. नेक्स्ट होना चाहिए डिस्टेंस फ्रॉम 100, और सबसे ज्यादा होना चाहिए डिस्टेंस फ्रॉम 20. ठीक है. सो n को कहां पे ले सकते हैं, एक एक करके सोचो. ये आपको नंबर लाइन के जो 4 रेंजेस बने, एक एक रेंज में सोचो. सो शुड आई टेक n टू द लेफ्ट ऑफ 20? इस बाजू लेके आए n को? नहीं, क्योंकि n को अगर आप 20 के लेफ्ट में लेते हो, उसका डिस्टेंस फ्रॉम 20 विल बी द लीस्ट. वो सबसे पास में होगा 20 के कंपेयर टू 60 एंड 100. बट हमें तो डिस्टेंस फ्रॉम 60 सबसे कम चाहिए, तो n को 20 के लेफ्ट में लेना तो डजंट मेक सेंस. सेम वे n को अगर आप 100 के राइट में लेते हो, इस बाजू अगर n को लेते हो, तो वो सबसे पास में होगा 100 के. हमें तो चाहिए डिस्टेंस फ्रॉम 60 टू बी द लीस्ट. वो 60 के पास में होना चाहिए n, तो 100 के पास रख के नहीं चलेगा. सो टेकिंग टू द राइट ऑफ 100 आल्सो विल नॉट वर्क. ठीक है. नाउ बिटवीन 20 एंड 60, इस बाजू बिटवीन 20 एंड 60 रखेगा, चलेगा क्या इनको? ठीक है, हम 60 के तो पास में उसको लेके जा सकते हैं. वी कैन टेक क्लोज टू 60 टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम 60 लेस. बट इफ यू टेक इट टू द लेफ्ट ऑफ 60, उसका 20 से जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा कंपेयर टू डिस्टेंस फ्रॉम 100 ना. अगर आप n को फॉर एग्जांपल 59 भी लेते हो, क्लोजेस्ट टू 60, अगर इंटीजर आपने 59 लिया, तो 59 का डिस्टेंस फ्रॉम 20 इज 39, whereas डिस्टेंस फ्रॉम 100 इज 41. ये तो नहीं चलने वाला ना. हमें डिस्टेंस फ्रॉम 100 कम चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम 20 सबसे ज्यादा चाहिए. सो टेकिंग n ऑन लेफ्ट ऑफ 60 विल नॉट वर्क आउट, क्योंकि वो 20 के पास में बन जाएगा. हमें तो वो 100 के पास में रखना है, 20 से सबसे ज्यादा दूर होना चाहिए. सो आई होप एवरीवन इज गेटिंग ऑल दिस लॉजिक. तो ये आपको सोचना है, ऐसे कुछ लिख के कुछ करना नहीं है. जस्ट हैव टू थिंक अबाउट ऑल दिस कि वेयर वी शुड टेक n. डिस्टेंस कॉन्सेप्ट के टर्म्स में सोचोगे, इट बिकम्स सो इजी टू थिंक कि n यहां पे भी लेके नहीं चलेगा. तो आपको n लेना है बिटवीन 60 एंड 100. अभी n आपको ऐसे लेना है कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम 60 शुड बी लीस्ट, डिस्टेंस फ्रॉम 100 शुड बी नेक्स्ट, एंड डिस्टेंस फ्रॉम 20 विल बी हाईएस्ट. वो तो अभी होने ही वाला है. इफ यू टेक x बिटवीन 60 एंड 100, डिस्टेंस फ्रॉम 20 तो हाईएस्ट हो ही जाएगा. बट डिस्टेंस फ्रॉम 100 शुड बी मोर देन डिस्टेंस फ्रॉम 60. तो कैन वी टेक x एट 80? x को 80 लेके चलेगा क्या? नहीं ना, क्योंकि 80 लिया तो डिस्टेंस फ्रॉम 60 एंड डिस्टेंस फ्रॉम 100 इक्वल हो जाएंगे. बट हमें तो 60 का डिस्टेंस जो है वो लेस रखना है. सो 80 itself is not allowed. So what is the maximum value that you can go up to is 79. x आप 61 onwards ले सकते हो. 60 itself again is not allowed, because 60 लिया तो डिस्टेंस फ्रॉम 60 हो जाएगा 0, डिस्टेंस फ्रॉम 100 होगा 40, डिस्टेंस फ्रॉम 20 आल्सो भी 40. तो इसलिए वो 60 तो नहीं चलेगा. तो you'll have to start from 61. So 61 से लेके 79 तक वैलिड वैल्यूज मिलेंगे आपको. So n will have to be from 61 to 79. These are the valid integer values. Very good. So all those who said 19, that is the correct answer. The number of integers is 19. Okay, so everyone understood how to utilize this distance concept to quickly answer. Done? Sure. Next question, take the screenshot, those who need it. Question 7. This was question 7. You square both sides. ये सारे inequalities को square करके conditions बनाओ. Raj. Square all the inequalities and create conditions. हाँ Raj. You will have to write this n minus 60 the whole square has to be less than
n minus 100 the whole square, which has to be less than n minus 20 the whole square. And simplify this. इससे आपको आंसर मिल जाएगा, but it will take a much longer time than this. Done? Let's see some miscellaneous questions. These kind of questions last 2-3 years every year is present. देखो CAT 23 का ये क्वेश्चन हो रहा है क्या? Raj, I did not understand your question. Positive value only for distance question मतलब? Distance is always positive. Distance will not be negative. दो नंबर के बीच में डिस्टेंस -6 and -3, इसमें डिस्टेंस इज 3. Distance cannot be negative. Numbers can be negative, but the distance between them will be always positive. ठीक है, चलो, so let's see how to do this question. X minus 2y is 1. Arushi is saying yes, correct, very good. So you have been given that x and y are real numbers such that they fit this equation, and you have to find the value of x minus 2y. So our equation is x square plus x minus 2y minus 1 the whole square equal to, the right hand side, when you open up this bracket, we get a minus 4xy and a minus 4y square. If you send these terms to the left hand side, we get x square plus 4xy plus 4y square plus x minus 2y minus 1 the whole square is equal to 0. Now notice that these terms, we can combine these together to form a square. X square plus 4xy plus 4y square, you can think of it as x square plus 2 times 2x, 2 times x times 2y, and 4y square को लिखो 2y the whole square. ऐसे सोचोगे इसको तो ये हो गया है x plus 2y the whole square. Okay, so that you should be able to recognize that this x square plus 4xy plus 4y square can be written as x plus 2y the whole square. और ये आगे का टर्म वैसे ही x minus 2y minus 1 the whole square. And now you have sum of two squares is equal to 0. For real numbers, अगर a square plus b square 0 होता है, वो कब पॉसिबल है? दो नंबर का स्क्वायर करके ऐड किया और सम 0 आया है, ये होगा कब? ओनली इफ द नंबर्स देमसेल्व्स आर 0. करेक्ट राज. सो रियल नंबर्स का स्क्वायर कभी नेगेटिव तो होता नहीं है. ऐसे नहीं कि एक नंबर ने दूसरे को कैंसिल किया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसलिए 0 बन गया. वो तो हो ही नहीं सकता. फॉर रियल नंबर स्क्वायर्स आर नेवर नेगेटिव. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 आया तो a हैज टू बी 0 एंड b हैज टू बी 0. दोनों नंबर 0 होना जरूरी है. तो यहां पे x plus 2y has to be 0 and x minus 2y minus 1 has to be 0. And from this we'll get x minus 2y is equal to 1. So that is our answer, x minus 2y 1. So this question model again last 3 years consecutive पूछा है. ये CAT 23 में था, वैसे ही CAT 22, 24 every year this has appeared last 3 years. So if anyone wants screenshot of this, quickly do so.
ये a square plus b square equal to 0 होने के लिए a has to be 0 and b has to be 0. RJ, have you understood that? So that question model, sum of squares 0. ये CAT 24 का क्वेश्चन है, सेम लॉजिक. क्विकली ट्राई टू डू दिस, चेक करो. दिस वाज इन लास्ट ईयर स्लॉट 2. So here how we can adjust the terms. So we have 4x square plus 4y square minus 4xy minus 6y and plus 3. अभी वो माइनस 6y अलग से है, तो उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए you have to keep a y square separate for it. Okay, so what we can do is 4x square minus 4xy, and ये 4y square को एक सिंगल y square अलग लो and 3y square अलग लो. So at 4y square I have split as a y square and a 3y square, and that 3y square I can combine with those 6y and 3 terms. So now this 4x square minus 4xy plus y square is nothing but 2x minus y the whole square. 2x का जो square है, that is that 4x square. The minus 2ab term is that minus 4xy and that y square term. And from these three numbers, we can pull out 3 common. And when you pull out 3 common, you will be left with y square minus 2y plus 1. So you get 2x minus y the whole square plus 3 times, this becomes y minus 1 the whole square is equal to 0. Again the same logic, sum of squares अगर 0 हुआ है, तो each number itself will have to be 0. Real numbers के लिए the only way that sum of squares can be 0 is if each number individually is 0. So 2x minus y has to be 0. So 2x will have to be equal to y, and y minus 1 will have to be 0. So y will be equal to 1. And since we now know y is 1, so 2x becomes 1. हमें पूछा है what is the value of 4x plus 5y. Our final question is to find 4x plus 5y. तो 2x अगर 1 है तो 4x उसका डबल, तो it will become 2, and 5y, y being 1, 5y will be 5, तो ये हो जाएगा 7. So the answer to the question was 7. ठीक है, तो आपको ये एडजस्टमेंट स्ट्राइक होना चाहिए कि कैसे एडजस्ट करना है टर्म्स को to get the sum of squares 0. The concept involved is very basic, but again ये एग्जाम टाइम में स्ट्राइक होना कि ये दो स्क्वायर्स कंप्लीट हो जाते हैं is the difficult part. So it cannot be said to be a easy question, even though concept involved is very basic. That idea during exam pressure कि ये दो स्क्वायर्स बन जाते हैं, जो स्ट्राइक होना is difficult part. So those who want screenshot of this, let quickly do so. Done? Chalo, next. Now there is a separate session that is planned for maximization, minimization, quant questions. So we'll not be doing too many maximum, minimum possible value questions in this session as such. वो अलग एक session होगा जिसमें पूरा
मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन क्वेश्चन से हम करने वाले हैं। तो एक दो एग्जांपल्स मैंने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए है, बट we will see majority of the questions of that type in the separate maximum minimum session. So now, look at the term that is given. That term x square minus 6x plus 10, that plus 10, we can break it as plus 9 plus 1. So if you can quickly think of that, कि उधर ऊपर एक square complete किया जा सकता है by breaking that 10 as 9 plus 1. So this becomes a pretty straightforward question. So now this x square minus 6x plus 9 can be written as x minus 3 the whole square. Correct? And x minus 3 the whole square is same as 3 minus x the whole square. Square अगर कर रहे हो तो वो x minus 3 का square करो या 3 minus x का करो, it is one and the same. So that x minus 3 the whole square can be rewritten as 3 minus x the whole square plus 1 upon 3 minus x. Now when you divide by 3 minus x, 3 minus x the whole square, when you divide by 3 minus x, you will be left with 3 minus x. Plus, you will have 1 upon 3 minus x. So notice that what we have got is a number and its reciprocal. We also know that x has to be less than 3. X अगर 3 से छोटा है, 3 minus x will be positive. So we have positive number और उसका reciprocal added together. So the concept that you should know is, for positive numbers, a plus 1 by a is always greater than or equal to 2 when a is positive. पॉजिटिव नंबर्स के लिए नंबर और उसका रेसिप्रोकल जब ऐड होता है, that sum is always greater than or equal to 2. The equality with 2 will happen when a is 1. a अगर 1 है तो उसका रेसिप्रोकल भी 1 होगा and that sum will be equal to 2. For any other positive number it will be greater than 2. वैसे ही होता है a plus 1 by a is less than or equal to minus 2 when a is negative. नेगेटिव नंबर्स के लिए नंबर और उसका रेसिप्रोकल सम इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू -2. इक्वल टू -2 होगा व्हेन a is taken as -1. If a is -1, reciprocal also will be -1. Okay, for any other value it will be less than or equal to -2. Yes, correct. The same thing also can be proven using the am greater than or equal to gm concept. उससे भी आप ये प्रूफ किया कर सकते हो, और यू कैन जस्ट डायरेक्टली रिमेंबर कि फॉर नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल द सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर पॉजिटिव नंबर्स. तो अभी यहाँ पे 3 माइनस एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, 1 अपॉन 3 माइनस एक्स एक पॉजिटिव नंबर है. सो पॉजिटिव नंबर और उसका रेसिप्रोकल जब ऐड हो रहा है, वो सम जो है इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2. इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा विल बी 2. दिस इज ऑप्शन सी. ठीक है. So if anyone wants screenshot of this slide, quickly do so. If anyone wants this screenshot, quickly do. Done. Try out this question, see if you're able to solve this.
है।